हेलो एवरीवन। आज आम मैंने डिस्कस करवा अप्रोचेस टू रिसर्च। एठी आम फर्स्ट बुझा अप्रोचेस टू रिसर्च तार मीनिंग कौन। आम जिते किसी गोटे रिसर्च करुँच से को सब स्ट्राटेजी मेथड्स आम अप्लाई करवा से रिसर्च टाको कंडक्ट करने आउ जितेबले स्ट्राटेजी और मेथड अप्लाई करवा सेतेबले डाटा कलेक्शन को टाइप रो करवा केमिति डाटा कलेक्शन करवा से डाटा टाको एनालाइज केमिति करवा तार एनालिसिस केमिति करवा सेतरो इंटरप्रिटेशन केमिति करवा डाटा रो इंटरप्रिटेशन केमिति करवा कंक्लूजन केमिति बाहर करवा से सब गुड़ाक प्रोसेस को आमे कहूचे रिसर्च अप्रोच और अप्रोचेस टू रिसर्च। तो एठी अप्रोच कहले आमे बुझुचे it refers to the overall strategies and methods used to conduct research guiding the collection analysis and interpretation of data। तो ये अप्रोच कहले आम बुझिले टोटल जहाँ भी मेथड स्ट्राटेजी आम यूज करवा गोटे रिसर्च कंडक्ट पाई केमिति डाटा कलेक्शन करवा को टाइप रो डाटा कलेक्शन करवा देन डाटा को एनालाइज केमिति करवा सेथिरु इंटरप्रेट केमिति करवा कंक्लूजन केमिति आम फाइंड आउट करवा ये सब गुड़ा को आम रिसर्च अप्रोच बोली कहले ये सब प्रोसेस गुड़ा को आम अप्रोच बोली कहउचंती। तो ये रिसर्च अप्रोच इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। गोटे हला क्वालिटेटिव रिसर्च and quantitative research। तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च कौन क्वांटिटेटिव रिसर्च कौन ए बुझा। क्वालिटेटिव रिसर्च माने इट फोकस ऑन क्वालिटी अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस। क्वालिटी को अंडरस्टैंड करिवो इटा ह्यूमन बिहेवियर एक्सपीरियंस थ्रू मेथड्स लाइक एठी मेथड को गुड़ा के यूज हो डाटा कलेक्शन पाई इंटरव्यू ऑब्जर्वेशन तो ये सब गुड़ा है क्वालिटेटिव रिसर्च। आम जिते गोटे सपोज एग्जांपल आम गोटे स्टूडेंट रो कौन करुचे स्टूडेंट कैरेक्टर और सोशल इंटरेक्शन ये सब गुड़ा जिते कौन करवा रिसर्च करवा सेतबेले आमे ताकू ऑब्जर्व करवा किछि तार इंटरव्यू नवा ए सब गुड़ाक क्वालिटेटिव रिसर्च रे जीव। देन क्वांटिटेटिव रिसर्च बुझवा जोटा कि क्वांटिटी को स्पेसिफाई करबो इट इन्वॉल्व्स स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तो ये कौन रहिबो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टू टेस्ट and
quantify relationships. एटी मेनली स्टैटिस्टिकल डाटा यूज होबो बा स्टैटिस्टिकली एनालिसिस करा जिवो. तो मेनली हमरो रहिला अप्रोचेस टू रिसर्च रे क्वालिटेटिव रिसर्च क्वांटिटेटिव रिसर्च आ गोटे रही जाए मिक्स्ड मेथड रिसर्च. किंतु मैक्सिमम आमे पढ़ंती क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च उपरे पढ़िबा. किंतु आउ गोटे अछि मिक्स्ड मेथड रिसर्च जो थरे कि बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऐड हबो. क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव. तो एति गेला बेसिक कांसेप्ट अप्रोचेस टू रिसर्च रो. किंतु हमर सिलेबस रे स्पेसिफिकली देछि मेजर रिसर्चेस जोटा कि अछि डेस्क्रिप्टिव रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. तो हमको ओनली पढ़िबा को पड़िबो कहा उपरे डेस्क्रिप्टिव रिसर्च, हिस्टोरिकल एंड एक्सपेरिमेंटल. ए तीनटा ही हमको देखिबा को पड़िबो. तो ये एक्सपेरिमेंटल टा पळेबो क्वांटिटेटिव रे. आउ ए दीटा जिबे क्वालिटेटिव रिसर्च. बुझिला. तो एबे हमें देखिबा डेस्क्रिप्टिव रिसर्च. तो descriptive research are those studies which are concerned with describing the characteristic a particular individual or a group of individual. जोटा कि हमरो describe करिवो. descriptive research ता नेम रो हमें जानि परिबा एटा हला describe. Describing the characteristics ए रिसर्च अंडर रे सोशल रिसर्च गुड़ाक करा जाए. सोशल रिसर्च सब डेस्क्रिप्टिव रिसर्च फॉलो करिकी करा जाए. सोशल फील्ड रे जहाँ भी रिसर्च करा जाए. The descriptive studies are designed to obtain pertinent and precise information concerning the current status of phenomena and whenever possible to draw valid conclusions from the facts discovered. एठी मेनली हमें बुझिबा कोन ना एटा डिस्क्राइब करबो जहाँ भी फेनोमेना हमें रिसर्च करछे बा स्टडी करछे ताको कोन करबो डिस्क्राइब करबो, स्पेसिफाई करबो, डिफाइन करबो. डिफाइन, क्लारिफाई, स्पेसिफाई ये सब करिवो. व्हाट वी वांट्स टू मेजर एंड मस्ट फाइंड adequate method for that. It involves measurement, classification, analysis, comparison and interpretation. तो ये सब गुड़ाक रहिबो. कंपेयर करि हबो, इंटरप्रेट करि हबो, क्लासिफाई करि हबो, मेजरमेंट करि हबो, एनालिसिस मध्य करि हबो. It provides information with regard to what exists with regard to variables or conditions in a situation. Suppose आमी कोन करछे गोटे
रिसर्च करवा जनकर कैरेक्टरिस्टिक्स रिसर्च करुचे बा कैरेक्टर गोटे इंडिविजुअल कैरेक्टर रिसर्च करुचे तो से कैरेक्टर जोटा सेटा केमिति वैरी करुची को सिचुएशन रे वैरी करुची माने गोटे लोक केमिति रिएक्ट करुची को सिचुएशन रे बा केतेबेले रिएक्ट करूनी सेठी सिचुएशन कौन अच्छी सपोज आमे तार आंगर गोटे देखिले आंगर केतेबेले ताकू आंगर आसुची केतेबेले से आंगर टाकू कंट्रोल कर पारुची केतेबेले कंट्रोल करि पारुनी को सिचुएशन रे से सब गुडा को कौन हबो ए डेस्क्रिप्टिव रिसर्च थ्रू रे जानि हबो व्हाट वी वांट बाय आइडेंटिफाइंग स्टैंडर्ड्स ऑफ नॉर्म्स with which to compare the present conditions ता माने दीटा सिचुएशन गोटे हला से ता फैमिली भितरे तार एंगर केते आछी बा को सिचुएशन रे आछी जते बेले आउटसाइड फैमिली अछि आउटसाइड रे से केमिति रिएक्ट करछि बा केमिति को एंगर आछी एठी कंपेयर करके ए जिंसटा जानि हबो जे एठी केते बा को सिचुएशन केमिति काम करछि तो प्रेजेंट सिचुएशन कौन अच्छी से फैमिली भितर थिला बेले केमिति रिएक्ट करथला आउटसाइड रे केमिति रिएक्ट करछि से जिंसटा कंपेयर करके जानि हबो तो एटा हला से जिंस देन हाउ टू अचीव गोल्स बाय एक्सप्लोरिंग पॉसिबल वेज एंड मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स और द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स तो एठी बेसी कौन करनी मैनिपुलेशन काम करनी आमे मैनिपुलेट करने को किसी चेष्टा करवानी बा किसी चेंज करने को ट्राई करना सिचुएशन कौन अच्छी से अकॉर्डिंग केमिति पॉसिबल वेज बाहर करहब से एक्सपीरियंस को यूज करके कौन करुचंती गोलटा अचीव केमिति करहब सेटा को एक्सप्लोर करने को आछि मींस आमे सॉल्यूशन रो वेटा को फाइंड आउट कर परबा थ्रू डेस्क्रिप्टिव रिसर्च एई केस रे हमें डेस्क्रिप्टिव रिसर्च टाको यूज करचंती सॉल्यूशन रो वे ऑफ सॉल्यूशन से गुडा को फाइंड आउट कर परबा देन स्टेप्स ऑफ डेस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टेप्स कौन सब रही आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग द प्रॉब्लम फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग द प्रॉब्लम फर्स्ट है प्रॉब्लम कौन अच्छी जितेबाला आम गोटे रिसर्च करुचे तार अप्रोच आम यूज करुचे अप्रोच बा डेस्क्रिप्टिव रिसर्च से फर्स्ट आमको प्रॉब्लमटा कौन अच्छी ताकू आइडेंटिफाई करने को पड़ो आइडेंटिफाई और डिफाइन करने को पड़ो प्रॉब्लम है एंगर इश्यू गोटे स्टूडेंट रो एंगर इश्यू आमे सपोज एटा नेले गोटे प्रॉब्लम हिसाब रे नेले तो आमे आइडेंटिफाई एठी कले एंगर टाको देन रेशनल ऑफ द स्टडी तारो इंपोर्टेंस कौन रही आमे कौन पाई स्टडी टा करूचंती सेटा देखिबा देन थर्ड स्टेप ऑब्जेक्टिव्स ऑब्जेक्टिव्स कौन अछि देन हाइपोथेसिस माने कौन अ टेंटेटिव स्टेटमेंट about the solution of the problem तो एठी आमे नै छै एंगर इशू तो एठी हमर हाइपोथेसिस कोन हो गोटे टेंटेटिव स्टेटमेंट फर्स्ट आमे कोन करबा गोटे स्टेटमेंट आमे फॉर्म करबा जोटा कि कौन कर तार सॉल्यूशन को बा तार कज जदि एंगर रो कज नौचे सेटा स्पेसिफाई करबो जदि हमें कज ऑफ एंगर नैचे एठी गोटे स्टेटमेंट दबा फियर प्रमोट्स एंगर तो एटा फियरटा एंगर को प्रमोट करि पारे बा न करि पारे किंतु आमे एठी गोटे हाइपोथेसिस क्रिएट कले कोन ना फियरटा एंगर को प्रमोट करूची सेटा आमे पछरे टेस्ट करबा एटा ट्रू कि फॉल्स तो ए जो स्टेटमेंट आमे नैचंती बा गोटे अज्यूम्पशन नैचंती
टेंटेटिव अज्यूमशन बा स्टेटमेंट जोटा कि सॉल्यूशन हो पारे जहाँ भी आमर प्रॉब्लम अच्छी तार सॉल्यूशन हो पारे बा कॉज हो पारे एटा कहार ना आंगरटा को प्रमोट करुची किए से ना फियर सेठी मे बी फियरटा प्रमोट करि पारे बा न करि पारे किंतु एटा हला गोटे हाइपोथेसिस जोटा आमे स्टेटमेंटटा को नेले सेटा पछरे टेस्ट करके आमे जानि पारिबा एटा एक्चुअल सॉल्यूशन की सॉल्यूशन नुहे एक्चुअल फियरटा प्रमोट करूची एंगर को कि प्रमोट करूनी तो एटा हला क्रिएशन ऑफ हाइपोथेसिस फॉर्मेशन करिवो देन चूज अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट एंड सोर्स मटेरियल सब्जेक्ट मीन्स सैम्पलिंग जोठी से ऑब्जर्व करिवो जहा को से टेस्ट करिवो सिलेक्ट और कंस्ट्रक्ट डेवलपमेंट ऑफ टूल्स फॉर कलेक्टिंग डाटा टूल डेवलपमेंट करिवो डाटा कलेक्शन पाइका जेमति कि रेटिंग स्केल हो गला ऑब्जर्व करिवो क्वेश्चनर हो गला ए सब गुडा टूल से डेवलप करिवो डाटा कलेक्शन पाइका देन डिस्क्राइब एनालाइज एंड इंटरप्रेट द डाटा इन क्लियर एंड प्रिसाइज टर्म देन डाटा एनालिसिस इंटरप्रेट करिवो ड्रॉ सिग्निफिकेंट एंड मीनिंगफुल कनक्लूजन जिते डाटा से एनालिसिस करदेला तापर से कौन ना तार कनक्लूजन ड्रॉ करिवो देन फाइनली राइटिंग द रिपोर्ट लिखियो फाइनल से कौन सब फाइंडिंग्स पाइछि से सब रिपोर्ट लिखियो तो एटा थिला स्टेप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च देन आमे देखिबा टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च टाइप्स रे हमरो सर्वे रिसर्च स्टडीज जाई परिबो इंटर रिलेशनशिप स्टडीज जाई परिबो डेवलपमेंटल स्टडीज जाई परिबो तो सर्वे स्टडीज आमे देखिबा सर्वे स्टडीज कोठी हे परिबो स्कूल सर्वे हे परिबो जॉब एनालिसिस हे परिबो पब्लिक ओपिनियन सर्वेज हे परिबो सोशल सर्वेज हे परिबो केस स्टडीज हे परिबो सब गुडा सर्वे स्टडी भितरे जीवो तो सर्वे करी की कौन हम डाटा कलेक्शन करहब बा रिसर्च करहब सर्वे स्टडीज रु आमे फाइंडिंग्स पाई परिबा देन स्कूल सर्वे मेनली आमर जेहेतु एजुकेशनल रिसर्च आमे पढ़ुचंती आ भितर आमर स्कूल सर्वे यूनिवर्सिटी सर्वेज हो पार ये सब गुड़ाक आ भितर इनक्लूड रहिबो जोथरे कि आमे इन्वेस्टिगेट कर परिबा इवैल्यूएट स्टेटस सर्वे जो थ्रू कि इवैल्यूएट करहब एक्जिस्टिंग कंडीशंस को इवैल्यूएट करहब इवैल्यूएट कला परे कौन करहब से सिचुएशन को इम्प्रूव करहब बा सॉल्यूशन फाइंड आउट करहब प्रॉब्लम रो सॉल्यूशन देन देखिबा इंटर रिलेशनशिप स्टडीज ए सब गुड़ाक डेस्क्रिप्टिव रिसर्च भितर जाउची तो इंटर रिलेशनशिप स्टडीज को दिस टाइप ऑफ स्टडी फोकसेस ऑन फाइंडिंग the relationship between facts of the existing phenomenon which provide a deeper insight into various problems जिते गुड़े फैक्ट्स रहिले बा एक्जिस्टिंग फेनोमेनन जहाँ सब फैक्ट रही भितर कौन रिलेशन रही ता भितर कोटा फाइनल प्रॉब्लम रो सॉल्यूशन हो पारिबो बा प्रॉब्लम रो कॉज कोटा सेटा हमें जानि परिबा इंटर रिलेशनशिप स्टडीज रो तो एठी डिफरेंट टाइप ऑफ इंटर रिलेशनशिप स्टडीज पुणी अच्छी गोटे एक्स पोस्ट फैक्टो कॉजल कंपैरेटिव स्टडीज कोरिलेशन एंड प्रेडिक्शन स्टडीज देन क्रॉस कल्चरल एंड कंपैरेटिव स्टडीज ये सब गुड़ाक इंटर रिलेशनशिप स्टडीज रे जाउची तो एबे हमें खाली बेसिक आइडिया या ऊपर देखि नबा जो थ्रू कि गोटे गोटे क्वेश्चन मैक्सिमम गोटे गोटे क्वेश्चन पके दो तो देखिबा एक्स पोस्ट फैक्टो और कॉजल कंपैरेटिव स्टडी सच टाइप ऑफ स्टडी not only explore what a phenomenon is like but how and why it occurs गोटे फेनोमेनन केमिति सेटा ओनली एक्सप्लोर करबनी ता सहित तार हाउ एंड व्हाई इट अकर्स तार कॉज एंड मेथड्स मध्य फाइंड आउट करिवो The main objective of the researcher is to compare the likeness and differences among phenomena to discover what factors or circumstances seem to accompany or contribute to the occurrence of certain events, conditions or practices. तो ये सब गुड़ाक जानी हम इट इज यूजफुल इन द सिचुएशन व्हेन द एक्सपेरिमेंटल मेथड इज इम्प्रैक्टिकल और कॉस्टली इन टाइम मनी एंड एफर्ट जितेबाला एक्सपेरिमेंटल मेथडटा यूजफुल होनी सेतेबाला एटा
काम दब कोटा ना एक्स पोस्ट फैक्टो और कॉजल कंपैरेटिव स्टडी। तो ये आउ गोटे जिनस मन रखा पड़ो ए कौन हम द रिसर्चर प्रेडिक्ट्स द पॉसिबल cause behind an effect that has already occurred। जो इफेक्टा ऑलरेडी अकर हो सारी तार पॉसिबल कॉजटा फाइंड आउट करिवो कॉज एंड इफेक्ट एति ही मन रखा पड़ो। फॉर एग्जांपल इफ ए चाइल्ड एंड डेलिक्वेंट दैट इज वन हु इंडल्जेस इन क्रिमिनल एक्टिविटीज। जो चाइल्ड क्रिमिनल एक्टिविटीज रे इन्वॉल्व अच्छी then in order to find the basic reason behind such delinquency से कौन पाई से criminal activities रे involve हैला the researcher would try to find out the various events that have occurred। कौन पाई से सेतरे involve हैला तार various events जेते सब cause अछि सेटा find out करिवो। The expected possibilities may be lack of discipline at school। तार cause may be है पारे lack of discipline। family history है पारे तार family रे सेमती criminal activities करुवा किए भी member थिबे तो सी तांको follow करी से टाइप रो करथाई पारे। then peer effect तार friend बा तार group जे थिबे से माने भी सेतरे जदी involve थिबे ये तांको संगे involve थिबो और socialization। तो ये सब गुड़ा कॉज हो पारे। तो यहाँ एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च रु फाइंड आउट करहब जो इफेक्टा ऑलरेडी हो सारी तार कॉज कौन। देन देखिबा कोरिलेशन एंड प्रेडिक्शन स्टडीज। इट्स कंसर्न्ड विथ डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप एक्जिस्टिंग बिटवीन वेरिएबल्स। वेरिएबल मान भितर वेरिएबल्स मीन्स जो सिचुएशन जे कि कंट्रोल कर जिते गुड़े फैक्टर्स जहाँ भी अच्छे भितर रिलेशनशिप्स कौन रोचे से सब गुड़ाक भितर कोरिलेशन स्टडीज फाइंड आउट कर परिबो। तो ये स्टडी रे यूज करा होची कौन पाई ना डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्जिस्टिंग फेनोमेनन एंड एनेबल ए रिसर्चर टू ascertain the extent to which variation in one variable are associated with variation in another। जहाँ भी फैक्टर्स रहिले जहाँ भी वेरिएबल्स रहिला से केमिति तांको भितर एसोसिएट माने तांको भितर कनेक्शंस कौन रची किए केमिति इफेक्ट पकोची कहा ऊपर से सब गुड़ा फाइंड आउट करहबो कोरिलेशन एंड प्रेडिक्शन स्टडीज। देन देखिबा क्रॉस कल्चरल एंड कंपैरेटिव स्टडीज। क्रॉस कल्चरल रे कौन हबो aim of the researcher is to make explicit comparisons of a number of societies। एटा mainly societal issues ऊपर काम करिवो। comparison of a number of society compare करिवो। such studies seeks to demonstrate whether finding concerning human behavior are valid for all human beings or are confined to one culture। से जो सोसाइटी को कौन करिवो कंपेयर करिवो सेठी देखिवो सोसाइटी रे जो ह्यूमन अछंती से केवल तांको निज सोसाइटी पई केमिति बिहेव करछन्ती अदर सोसाइटी पई केमिति बिहेव करछन्ती मा टोटल ओवरऑल सब सोसाइटी पई गोटे टाइप रो बिहेवियर देखौछन। तो ये टाइप रो स्टडी करिवो ताको कंपेयर करी ए सब जिंस जानि हबो। देन आसीमा डेवलपमेंटल स्टडीज। तो डेवलपमेंटल स्टडीज केते बेले यूज हबो इन्वेंटिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चिल्ड्रन। केते बेले कैरेक्टरिस्टिक टाको इन्वेंट करछन्ती एंड द वेज इन व्हिच दिस कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज विथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो एठी हम जते बेले एंगर इश्यूज नहीं थिले तो हमें देखिले 5 इयर्स जते बेले ताको हेची सेते बेले तार एंगर केमिति अछि जते बेले ताको 15 इयर्स हे होची सेते बेले तार एंगर को लेवल रे अछि बा को फैक्टर ताको एंगर आसूची को फैक्टर पाई। तो से सब गुड़ाकर चेंजटा देखिए डेवलपमेंटल स्टडीज थ्रू रे। सच स्टडीज आर कंसर्न नॉट ओनली विथ द प्रेजेंट स्टेटस एंड इंटर रिलेशनशिप ऑफ फेनोमेना बट आल्सो विथ चेंजेस दैट टेक्स प्लेस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। 85 इयर्स से देखले पुणी 15 इयर्स से देखले धीरे धीरे आ भीतर भी हमें देखुवा 7 इयर्स रे केते हला 10 इयर्स रे केते अछि। तो ये सब गुड़ा देखिए डेवलपमेंटल स्टडीज थ्रू। तो ये डेवलपमेंटल स्टडीज रो पुणी टाइप्स अच्छी एठी लॉन्गिट्यूडिनल स्टडीज जीवो क्रॉस सेक्शनल स्टडीज जीवो
फॉलो अप स्टडीज ट्रेंड स्टडीज डिफरेंट टाइप ऑफ स्टडीज जीव जोड़ा कि डेवलपमेंटल स्टडीज जीव जिते ग्रोथ को आम स्टडी कर लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शनल स्टडीज इन्वॉल्व हे ग्रोथ मीन्स कौन नॉलेज ऑफ द नेचर एंड रेट ऑफ चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म तार नॉलेज बा तार नेचर जहाँ भी तार कौन हो चेंजेस होची ता टाइम वाइज से सब गुड़ाक देख तो ये ग्रोथ स्टडीज रे हमें देखिपर केमिति डेवलपमेंट गोटे अटेंड करुची गोटे टाइम पीरियड भितर बा गोटे टाइम रो आ गोटे टाइम को आसिला परे गोटे स्टूडेंट से सब गुड़ाक आम फाइंड आउट कर लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज रे कौन हम आम ताको गोटे लॉन्ग लाइफ स्पान पाइका ऑब्जर्व करवा लॉन्ग लाइफ स्पान ऑफ द सेम सब्जेक्ट ग्रुप और इंस्टीट्यूशन जहाँ भी आम रिसर्च कर गोटे लॉन्ग लाइफ स्पान ताको ऑब्जर्व करवा तो सेठी लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज हम सच स्टडीज आर मोस्टली यूज्ड इन क्लिनिक्स एंड लैबोरेटरीज लॉन्ग लाइफ स्पान जेहेतु आम सब अवेलेबल करके रखिथा दरकार तो एगुड़ाक मेनली क्लिनिक एंड लैबोरेटरीज रे देखा मिले देन देखिबा क्रॉस सेक्शनल स्टडीज तो एथिरे कौन हम रैंडम सैंपल of individuals of successive ages are selected and one set of measurements of different individuals from each age level are taken as the basis for developing nodes. तो टोटाल ये आम समस्त को ऑब्जर्व करवानी से रैंडम सैंपल को कौन करने पड़ो सिलेक्ट करने को पड़ो आम जदि एज देखुं से एज रो पर्टिकुलर गोटे गोटे एज रू आमको सैंपल सिलेक्ट करने को पड़ो डिफरेंट इंडिविजुअल एंड डिफरेंट एज रो सैंपल सिलेक्ट करी से अकॉर्डिंग फ्रॉम ईच एज लेवल आर टेकन एज ऑन द बेसिस फॉर डेवलपिंग नॉर्म्स ईच एज विथ और डिफरेंट एज विथ डिफरेंट इंडिविजुअल्स सिलेक्ट करी एथिरो तांको स्टडीज करबा को पड़बो तो एटा क्रॉस सेक्शनल स्टडीज रे जाउची देन देखिबा फॉलो अप स्टडीज these are conducted to investigate the subsequent development of individual after a specified treatment or condition गोटे specific treatment बा condition आमे सपोज रिमेडियल मेजर्स प्रोवाइड कले गोटे स्टूडेंट को आफ्टर रिमेडियल मेजर तार डेवलपमेंट कौन होइची देखिबा आफ्टर गिविंग रिमेडियल मेजर्स डेवलपमेंट को चेक करवा तो यहाँ है फॉलो अप स्टडीज देन देखिबा ट्रेंड स्टडीज सच स्टडीज आर यूज्ड टू ऑब्टेन एंड एनालाइज सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डाटा टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड टू प्रेडिक्ट व्हाट इज लाइकली टू टेक प्लेस इन द फ्यूचर जोटा कि ट्रेंड स्टडी एबे कौन चलची फ्यूचर रे ए जिनसटा केमिति हेइथिबो प्रेजेंट रो फ्यूचर आडको आमे देखुचंती तो एटा हला ट्रेंड स्टडीज तो एटा हे पारे डॉक्यूमेंटरी एनालिसिस थ्रू रे ट्रेंड स्टडी करि हेबो सर्वेस थ्रू रे मध्य ट्रेंड स्टडीज करि हेबो बट एठी कोन रिपीटेड इंटरवल्स रहिबो आमे 2010 रे करथिले पुणी 12 रे कले पुणी 14 रे कले एबे पुणी से टाइप रो करी करी 24 रे कले तो ए टाइप रो रिपीटेड इंटरवल्स रहिबो तो एटा कला ट्रेंड स्टडीज तो एटा थिला हमरो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एबे हमें देखिबा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च